इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे एसिडिक कंडीशन में और बेसिक कंडीशन में। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ होता है, तो उनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले हम टू हाफ रिएक्शंस लिखेंगे। सो MnO4 नेगेटिव चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में, तो एक हाफ रिएक्शन होगा MnO4 नेगेटिव चेंजिंग टू Mn2 प्लस में। अनदर हाफ रिएक्शन होगा Ag इज चेंजिंग टू Ag प्लस, सो यहाँ पर Ag चेंजिंग टू Ag पॉजिटिव आयन। ये अनदर हाफ रिएक्शन है। पहले हम ईच हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन हमें मिलेगा। तो इस फर्स्ट को इसको बैलेंस करते हैं। 1 Mn हियर 4 ऑक्सीजन है। सो टू ऐड ऑक्सीजन ऐड वाटर मॉलिक्यूल, हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो फॉर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू ऐड ऑक्सीजन ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स। टू ऐड ऑक्सीजन ऐड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर, तो हम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। तो 4 ऑक्सीजन मिल गए। अब नाउ how many हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर? 4 × 2 8 हाइड्रोजन्स। सो 8 हाइड्रोजन्स के लिए अदर साइड में हम 8H प्लस लिखते हैं। So now all the atoms are balanced. 1 Mn, 1 Mn, 4 oxygens, 4 oxygens, 8 hydrogens, 8 hydrogens. Last step है balancing of charges. Charges को balance करना है। तो राइट साइड हमें 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, इधर लेफ्ट साइड में 8 पॉजिटिव चार्जेस हैं, 1 नेगेटिव चार्ज है। 8 पॉजिटिव चार्ज एंड 1 नेगेटिव चार्ज। तो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7 पॉजिटिव चार्जेस होंगे इधर। 2 पॉजिटिव राइट साइड है, 2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो 5 पॉजिटिव चार्जेस लेफ्ट साइड हमें मिलेंगे। तो इनको हमें जीरो करना है, तो हम 5 नेगेटिव चार्जेस ऐड करते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, सो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो चार्जेस जीरो हो जाएगा। सो हम दोबारा चेक कर लेते हैं। लेफ्ट साइड है 5 नेगेटिव हियर एंड 1 नेगेटिव, टोटल 6 नेगेटिव एंड 8 पॉजिटिव। सो व्हाट इज द रिजल्ट? 2 पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव है, तो रिएक्शन इज बैलेंस। ये रिएक्शन देयर इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये होगा हाफ रिडक्शन रिएक्शन। तो हाफ रिडक्शन रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, सो इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो रहे हैं बिफोर द एरो, सो इट इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन। Another half reaction, Ag is changing to Ag plus. So one silver, and they just we have to cancel this charge. So हम यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन बैलेंस है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन बैलेंस है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे सो दैट टू गेट रिडॉक्स रिएक्शन। सो 8H प्लस MnO4 negative plus 5 electrons gives Mn2 plus 4H2O. ओके, नाउ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। सो फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल। तो 5 × Ag 5Ag, यह होगा 5Ag प्लस एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ विल ऐड टू इक्वेशन। So left side 5 electrons, right side 5 electrons cancel हो जाएंगे. So all the three reactants we write together. So 8H plus 5Ag plus MnO4 negative. And right side होगा all after the arrow whatever we have. So Mn2 plus 2H 4H2O and 5Ag plus.
Now this reaction is balanced in acidic condition. So we can confirm the charges here. So 5 positive charge here and 2 positive. Total यहाँ पे 7 positive charges हैं. लेफ्ट साइड में 8 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव. सो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव कैंसिल होगा तो 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं. तो चार्जेस भी बैलेंस है. नंबर ऑफ एटम्स आल्सो बैलेंस. So this reaction is balanced. 1 Mn, 1 Mn, 5 Ag, 5 Ag, 8 hydrogens, 8 hydrogens, 4 oxygens, 4 oxygens. Okay? तो इसी तरह हम दूसरी वन मोर इक्वेशन कर बैलेंस करते हैं. तो हियर पहले टू हाफ रिएक्शंस लिखेंगे हम. सो Hg प्लस नाइट्रेट प्लस Cl नेगेटिव गिव्स HgCl4 टू नेगेटिव एंड NO2. सो टू हाफ रिएक्शंस होंगे इसमें. Hg प्लस Cl नेगेटिव चेंज हो रहा है HgCl4 टू नेगेटिव में. अनदर हाफ रिएक्शन होगा NO3 चेंजिंग टू NO2. सो NO3 नेगेटिव चेंजिंग टू NO2. तो दो हाफ रिएक्शंस हमें मिल गए. हमको बैलेंस करेंगे. 1 Hg 1 Hg. दे आर 4 Cl. तो यहाँ पे Cl4 करेंगे तो वी विल राइट हियर 4. 4 Cl. Now we have to balance the charges. Here 4 negative charges हैं and here इधर 2 negative charges हैं. So हमें इधर 2 more electrons ऐड करने होंगे so that 4 negative charge 4 negative charges balance हो जाएंगे. So we add 2 electrons here. So total we have 4 negative charges left side or 2 इधर and 2 इधर. Total 4 negative charges on the right side. So this equation is there is loss of electron is called half oxidation reaction. Half oxidation reaction. Another half reaction is 1 nitrogen, 1 nitrogen. Here 3 oxygens. Here only 2 oxygens. So to add oxygen, we add water molecule. So 1 water molecule we'll add to get 1 more oxygen. So total we have 3 oxygen इधर 3 इधर. ये balance है. Now we have 2 hydrogens here. So we add 2H plus. Now all the atoms are balanced. Last step is to balance the charges. So 0 charge here, 0 charge here. So यहाँ पे 1 negative है, 2 positive. So 1 negative, 1 positive, they cancel. So 1 positive still remaining. So we add 1 negative charge here. See now 2 negative and 2 positive. So 0 charge है. So this reaction is gain of electron. इसको हम कहेंगे half reduction reaction. Half reduction reaction. Now we'll add the two equations. So इन दोनों equation को हम ऐड करेंगे. तो Hg plus 4Cl negative gives HgCl4 2 negative plus 2 electrons. Okay, so final equation में there should be no electrons. यहाँ 2 electron है, यहाँ 1 है. So इन दोनों को हम equal करना है. So we multiply करेंगे इसको 2 से. तो 2 times 2 4H plus हो जाएगा इधर. Plus 2 nitrate plus 2 electron. और इधर होगा 2NO2 plus 2 water molecules. Now we'll add the two equation. So 2 electron left side, 2 electron right side cancel हो जाएगा. और हम सारे रिएक्टेंट्स को एक साथ लिखेंगे. Hg plus 4Cl negative plus 4H plus 2 nitrate. And product side है HgCl4 2 negative plus 2 NO2 plus 2 water molecules. The equation is balanced है.
सो इसको हम कंफर्म करते हैं चार्जेस से। 2 नेगेटिव चार्ज ऑन द राइट साइड, और यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज एंड 6 नेगेटिव चार्ज। सो 6 नेगेटिव चार्जेस हैं और 4 पॉजिटिव चार्जेस। सो टोटल 2 नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे लेफ्ट साइड में होंगे। यहाँ पे भी हम 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। सो नंबर ऑफ चार्जेस आर बैलेंस। Number of atoms also we checked is balance. So for Cl, one mercury, and four hydrogens, and oxygens are 2 times 3, 6 oxygens. Here 2 times 2, 4 plus 5, 6. So all the atoms are balanced, charges are balanced. So this is balance equation in acidic solution. Okay, next हम balance करेंगे basic condition में। So up to acidic same process है। First we have to break into two half reactions. तो एक reaction होगा MnO4 negative changing to MnO2. Another half reaction होगा Cn negative changing to CnO negative. So 1 Mn, here 4 oxygens है, यहाँ 2 oxygens है. So 2 oxygens shortage है इधर, so हम 2 water molecules add करते हैं, 2H2O. So now 4 oxygens इधर हो गए, but 2 times 2 4 hydrogens हैं इधर, so 4H plus लिखेंगे हम. So now all the atoms are balanced. No charge here, no charge here. अब हम charges को balance करेंगे. So 4 positive charges, 1 negative charge. So 1 negative, 1 positive cancel होगा. So 3 positive charges remaining. तो उनको zero करने के लिए हम 3 negative charges add करेंगे, 3 electrons. So check and see, 3 negative here and 1 negative. 4 negative charges हैं, 4 positive charges, so 0 charge है. So this equation is balanced half reaction. So in this reaction there is gain of electron, so it is called half reduction reaction. Another half reaction है Cn negative changing to CnO. 1 Cn, 1 Cn, there is 1 oxygen here. तो यहाँ पे हम एक water molecule add करेंगे to bring the oxygen. So one oxygen, but now we have 2 hydrogens हैं इधर, तो हम 2H plus लिखेंगे. So now all the atoms are balanced. 2 hydrogens, 1 oxygen, 1 oxygen, 1 Cn, 1 Cn. चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में है 1 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है 1 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। सो 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो स्टिल रिमेनिंग 1 पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे हम 2 नेगेटिव चार्जेस ऐड करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैंसिल एंड 1 नेगेटिव रिमेन्स हियर। सो दोबारा चेक कर लेंगे चार्जेस को। सो 1 नेगेटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, 1 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज ये और 3 नेगेटिव चार्जेस। तो 3 नेगेटिव चार्जेस हैं एंड 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो टोटल क्या होगा, 1 नेगेटिव चार्ज। सो लेफ्ट साइड भी 1 नेगेटिव चार्ज है, राइट साइड 1 नेगेटिव चार्ज। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। And this is loss of electron. It is called half oxidation reaction. Half oxidation reaction. नाउ फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। सो फर्स्ट वी सी द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस इक्वल होना चाहिए एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट इन द फाइनल इक्वेशन देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड दिस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 2 times 3 6 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट कैंसिल। सो 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 8H प्लस 2 MnO4
plus 2 times 3, 6 electrons, and 2 MnO2, and 2 times 2, 4 H2O. And below equation को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल 3 H2O plus 3 Cn negative gives 3 CNO, and 3 times 2 6 H plus, and 3 times 2 6 electron. Now अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं to write redox reaction. And जो भी common ions left to right है they get cancelled. So यहाँ पे 6 electron cancel with 6 electron, and 3 water molecules cancel हो जाएंगे, 3 water molecules, so 1 water is remaining here. 6 H plus cancel हो जाएंगे, 6 H plus, so 2 H plus remaining here. Now we write all the reactants together. So 2H plus 2 MnO4 plus 3 Cn negative. And product side है 2 MnO4, sorry 2 MnO2 plus H2O plus 3 CNO negative. Now equation balance है now, but it is in acidic condition. So now we have to balance this in basic condition. तो basic condition के लिए जितने H हैं H plus उतने ही OH negative ऐड करेंगे both side. So 2H plus है इधर, so 2OH negative लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, 2H नेगेटिव राइट साइड ऐड करेंगे. और बेसिक कंडीशन के लिए अप टू हियर इज सेम एज एसिडिक कंडीशन, क्योंकि ये बेसिक कंडीशन में है इसलिए वॉट एवर नंबर ऑफ H प्लस सेम नंबर ऑफ OH नेगेटिव लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऐड करेंगे. सो वन साइड वी सी सेम नंबर ऑफ H एंड OH है, सो 2H plus 2OH negative will form 2 water molecule. And here 1 water molecule cancel with 1 water molecule, remaining here 1 water molecule. Now हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं H2O plus 2 MnO4 negative plus 3 Cn negative, and it gives 2 MnO2 plus 3 CNO negative and 2 OH. This reaction is in basic condition because there is OH in the equation and all the atoms are balanced, all the charges are balanced. So you can check here. So 2 MnO4 has 1 negative charge. So 2 MnO4 means 2 negative charges here and 3 negative charges here. Total we have 5 negative charges. This side we have 3 negative charges here and 2 here. So 5 negative charges. And all the atoms are balanced. So this is the equation in basic condition. Next, last equation. First step is to write two half reactions. So ClO negative changing to Cl2. The ClO negative changing to Cl2 now. Second half reaction होगी CrO4, sorry CrO2 negative changing to CrO4, 2 negative. Now each half reaction balance करेंगे, 1 chlorine, here 2 chlorine. So first we write here 2. So 2 chlorine, 2 chlorine. Now we have 2 oxygens. So 2 oxygen के लिए हम 2 water molecules add करेंगे. So 2 oxygens, 2 oxygens. But now we have 4 hydrogens. इधर 4 H plus add करेंगे. So now number of atoms are all balanced. So now we'll balance the charge. So 0 charge है इधर, 0 charge. Here 2 negative charge and 4 positive charges. So 2 negative, 2 positive, they cancel.
So still remaining 2 positive charge. So हम 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे. Check again, 2 negative and 2 negative, 4 negative charges, 4 positive charges. So 0 charge हो जाएगा. So this is called half gain of electron है इधर. So half reduction reaction. Half reduction reaction. So another half reaction, 1 chromium, 1 chromium, 2 oxygens here, 4 oxygens. So ये 2 ऑक्सीजन इधर शॉर्टेज है, तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, 2H2O. So 4 oxygens left side, 4 oxygens right side. Also we have 4 hydrogen H plus. इधर हम 4H plus लिखते हैं. So now all the atoms are balanced. We'll balance the charge. So 1 negative charge on the left side. Here 2 negative and 2 positive. They cancel. So यहाँ पे 2 positive charge still remaining. So हमें दोनों तरफ चार्ज बैलेंस करेंगे तो इधर हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे. Because 2 positive, 2 negative cancel, so 1 negative remains. Here also we have 1 negative charge. Again, you can check and see 3 negative and 2 negative. Total we have 5 negative charges. So balance the charge here. 2 negative charge, 1 negative charge. So 2 negative and 2 positive, 4 they cancel and 2 positive remains. So to cancel that, we have to add 3 electrons. Same thing. Now you can check 3 negative and 2 negative. Total we have 5 negative charges and 4 positive charges. So what is the net charge? 5 negative charges and 2 positive charges, so 1 negative charge. Here also we have 1 negative charge. So this equation is balanced. So in this reaction, there is a loss of electron. It's called half oxidation reaction. So half oxidation reaction. These two equations are balanced. Now to balance the charges, we see the electrons here, 3 electrons here, 2 electrons. So we should have same number of electrons on the opposite direction. So that final equation में electrons नहीं होने चाहिए. So इसको हम multiply करेंगे by 3 and this equation multiply करेंगे by 2. So 3 times 4, 12 H plus, I will write below. 3 times 4, 12 H plus 3 times 2, 6 ClO negative plus 6 electrons. And इधर होगा 3Cl2 plus 3 times 2, 6 water molecule. This below equation we multiply by 2. So 2 times 2, 4 water molecules plus 2 CrO2 and 2 CrO4 and 2 fours, 8 hydrogens and 2 times 3, 6 electrons. Now we'll cancel 6 electron, cancel with 6 electron. 4 water molecule cancel with 4, remaining here 2 water molecules. And 8H plus cancel with 8H plus, so remaining here 4H plus. Now the equation is 4H plus 6ClO negative plus 2 CrO4. Not 4, CrO2. Okay, CrO2. And then product side we have 3Cl2 plus 2 CrO4
and 2 water molecules. Okay, now up to here till acidic, now it is in basic condition. The basic condition के लिए हम whatever number of H plus, same number of OH भी write on both sides. So here 4H plus है, so हम 4OH negative लिखेंगे इधर left side and 4OH negative on the right side. So 4H plus 4OH will become 4 water molecules. And some water get cancelled, 2 molecules of water, 2 cancel, remaining 2 H2O. Now we'll write all the reactants together. So 2 H2O plus 6 ClO plus 2 CrO2. ये बनेगा 3 Cl2 plus 2 CrO4 plus 4 OH negative. Now we can check the charges here, 6 negative charge and 2 negative. So 8 negative charges left side. यहाँ पे 4 negative charge here and 4 negative charge here. So 8 negative charge on the right side. So this equation is balanced. I hope now you understand how to balance the equation. So please like, share and subscribe to our channel for more video like this. Thank you.